के बिना कुछ हो भी नहीं सकता Yes, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट very में. correct. So yes, I mean to say like you are the biggest stakeholder in the international business because you are operating that lines and logistics and all part. So I want to need the guidance to my students in the export import business, like what need to be take care in the logistic part in the international business. So you can Sure. introduce yourself Yeah. first and yes, you can start. Sure. First of all, it's a pleasure to speak with you all as per ma'am's platform, KD Sharma. I am Captain Guy. We are into maritime sector since last 30 years. And the logistic part, as ma'am rightly said, that is the major hurdle and major role which every trader, transporter, manufacturer needs to face or has to face that. Right. And India, as we all know, the country, it's one of the highest logistic costs are incurred when we are transporting or shipping any goods to any country in the world. Yes. That gives slightly more burden on the manufacturer, on the exporter from India. So that needs to be seen and sorted out. So the pointer is that first of all we need to be always ensure that all the goods, whatever we are doing, ships, Okay. they need to be having a marine insurance right from the factory setup right up to the delivery. In that, it should be covered as an intermodal. So road transit So that plus means, the yeah, other the transit. road, Yeah. the rail, and the marine ship. Marine ship. ship. Okay. So all three segments must come. Okay. Then only you should feel at pace and way that yes, at least if in case of any eventuality, things Okay. are covered. Yeah. Right. And then of course first we do that. Second is to check your liners, that whenever we are doing any of the shipments, it's always better to have the direct tie-ups with the liners, Okay. because that will clear all your more companies involvements, more people's involvement, so that there is no middleman's or Okay. less of Like, them like involved. that is actually true. But many cases we heard about that. Like lines are not accepting the low volume. Okay, that is also true. Yeah. That is, you are saying there is FCL and LCL, Yeah. right? Now, if there is LCL, then there has to be a consortium Yes. created whereby a couple of people, because once they are doing, Right. if they can match up, they can create this LCL so that it goes under a Okay. one container. But can any line I will accept one container also? Yes, they can. You can just book that and that will happen. That's not a problem. Okay. Liners are doing all out to go to the customer's Directly. doorstep. Okay. That's great. They are trying. Even the ICDs, they are also being instructed by the government Okay. to provide the services directly through the doorstep, Okay. so that if you are say in Pune, right, and you have a factory at your industrial area, you need to pack the goods or pack the containers. There is a provision by you as a one single container you wish to send, How? you can stuff, you can seal, custom seal there itself, Okay. and then from there ICD can pick up directly if you wish so. Otherwise, yes, you can make arrangement to send it to ICD. Otherwise, ICD also would be all out to send their systems, so that that's picked up right to the ICD, then haulage, the rail to the ship, and then from there to the destination, right? And that is the way to go about it in a So broader perspective. अगर शिप मतलब हमने शिपमेंट किया जी. and if anything happens to ship container vessel, जी. like, so what will be the how is the procedure to get it covered? If it is in the shipping, there is always a way that there is a hull, right? So if it is before the hull, then it is not the liner responsibility, right, on the ship. If it is before the hull, मतलब hull is the ship's framework. You know, if this is the ship, okay. right? So when they are loading the container, it passes
ओके द हाँ शिप हाँ हाँ एरिया में लोड करने के लिए, तो सो तब शिप के जाके ऊपर अगर कुछ हुआ तो देन यस इट विल बी तब योर से रिस्पांसिबिलिटी तब से वो ओके ओके द ओके लाइनर एंड एवरीथिंग दे कम इन इंटैक्ट, P&Is आर इन प्लेस, इंश्योरेंसेज आर मरीन इंश्योरेंसेज जो दैट इज ऑल्सो ऑटोमेटिकली लाइनर का है वो प्रिपेयर्ड है. दैट इज वाई इज द फर्स्ट इनिशियल कन्वर्सेशन आई सेड कि इट्स ऑलवेज एवरीथिंग इज बेटर कवर्ड या to take a marine insurance previously, राइट because India is still not being a very organized sector यस in यस this intermodal हाँ thing कि राइट आपका हर नेटवर्क कनेक्टेड नहीं है, हाँ रोड रेल एयर एवरीथिंग. तो हम लोग कपल ऑफ थिंग्स आर राइट वी आर राइट यूजिंग राइट शिप ओके तक पहुंचाने के लिए बराबर बंदरगाह तक. तो उधर तक हम ले लें ताकि अगर ट्रेलर भी है, कुछ ट्रेलर उलट जाता है, बराबर कुछ कंटेनर डैमेज हो जाता है, तो एटलीस्ट यू आर कवर्ड, ओके because ओके that time liner will not नॉट compensate, स्पॉन्सिबल but आपका marine insurance काम आए. And in India there is public sector companies which do that, ओके so ओके that should So not how be a fast problem. it is like getting the insurance done? It all depends that initially if you have taken with very clear declarations, तो उतना easy आपको claim मिल जाता है. There if you are feeling कि नहीं, okay I just want conditional और इतना ही limited limitations के साथ में marine insurance, तो of हाँ course it will ओके cause delay. ओके ओके तो दैट अगर मीन्स पहले ही हमें क्लैरिटी हो कि ठीक है ये गुड्स हैं, कमोडिटी है, हाँ डेक्लेरेशन ऑफ कमोडिटी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके राइट. वो अगर आपने बिल्कुल ठीक से किया हुआ है, आई थिंक देन यू नीड नॉट वरी, ओके एटलीस्ट फ्रॉम द मॉनेटरी पार्ट. राइट राइट सो इन टर्म्स लाइक एक ऐसे भी मैंने सुना था कि लाइंस में जो भी रिफर कंटेनर्स जाते हैं जी तो कभी कभी वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे से तो सारा ठीक से गया वहाँ पे जाने के बाद जब भी ओपन हुआ तो टेम्परेचर वेरिएशन था या प्लग इन ही नहीं किया गया था तो बिल्कुल. उस फॉल्ट इज दैट इज़ ऑफ कोर्स दो जगह इसमें फॉल्ट आता है कि जब आपका कंटेनर वहाँ से आपने कर दिया, हाँ ठीक है, वहाँ से यार्ड आ गया, हाँ ICDs तक आ गया, राइट सो देर इज़ डिजिटल टेम्परेचर्स जो रिकॉर्ड होते हैं राइट उसमें, राइट राइट. सो दैट टेम्परेचर टिल दैट इज़ ऑफ कोर्स द ट्रांसपोर्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके विच इन इंडिया अनफॉर्चुनेटली क्लेम नहीं कोई ना करते हैं ना वो लेते हैं. तो इट कम्स बॉइल्स डाउन टू द एक्सपोर्टर. ऑब्वियस राइट तो वो अपना अगर मरीन इंश्योरेंस लेता है तो वहाँ तक वो कवर सेफ सेफ है. यस अब बात आती है यार्ड में. यार्ड में देर आर स्टेशंस जहाँ पे रीफर कंटेनर्स प्लग इन रहते हैं. ओके हाँ वहाँ पे एक रीफर करके मैनेजर होता है, रीफर पर्सन. राइट ही कीप्स चेकिंग, ही नीड्स टू चेक दैट ऑल कंटेनर्स आर प्लग लगाएंगे प्लग लगाए हैं, उनका मॉनिटर एवरी फ्यू कपल ऑफ आवर्स में ही हैज़ टू मेक अ रिकॉर्ड. तो ओके वहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट ICD में. राइट और वहाँ से जब शिप जाता है तो इट इज़ टोटली ऑन चार्टर. वो जो शिप लाइनर आपका लेके जा रहा है उनकी है, फ्रॉम एक्सपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू. राइट तो उससे क्योंकि दैट इज़ शिप्स फॉल्ट या शिप्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि प्लग इन्स नहीं हुए, चेक इन्स नहीं हुए ओके आपके, ओके एंड टेम्परेचर्स नहीं रिकॉर्ड हुए, एंड बिकॉज वो रिकॉर्ड करके शिप से स्टाफ सेंड्स इट टू द लाइनर ऑल्सो ऑन डेली 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, जो भी एज पर द मैनिफेस्ट रिक्वायरमेंट है. अगर कोई हाई पेरिशेबल गुड्स या कार्गो है तो उसका उसी हिसाब से टेम्परेचर लेना है, इंक्लूडिंग द पल्प. ओके वो उनको देना है. और सेम जब वो डेस्टिनेशन में जाता है, देन वहाँ से व्हेन दे पुट अशोर, इफ दैट कंट्री इज नॉट वेरी मच डेवलप्ड कंट्रीज का अगेन वी नो देर आर नो राइट इशूज. इफ इट इज़ नॉट सो डेवलप्ड, बेनिन है, कॉन्गो है, ट्रिनिडैड है, देन यस देर इज़ इशू कि जब आपने किया तो यू नीड टू इन्फॉर्म योर काउंटर पार्ट, शिपर और रिसीवर, दैट ओके he needs to take that container delivery at the earliest, so that these राइट राइट things don't एटलीस्ट arise, डैमेज damage ज़्यादा ना हो. राइट This is what we can do to prevent this. ओके You know.